Hello students, we are studying about the village of Palampur. So here is the shopkeepers of Palampur. We are studying the non-farm activities in Palampur. This is the third subtopic of non-farm activities in Palampur, the shopkeepers of Palampur. People involved in trade are not many in Palampur. The traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods from wholesale markets in the cities and sell them in the village. You will see small general stores in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencils, even some clothes. A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops. They sell eatables. सो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कुछ लोग जो होते हैं गांव में वो व्यापारी बन के एक छोटे से रूप में व्यापार करते हैं। वो शहर से सामान खरीद करके लाते हैं और फिर गांव में उसे बेचते हैं। तो वो थोड़ा हाई रेंज पे बेचते हैं ताकि उन्हें प्रॉफिट हो सके। ये छोटे से जो घरेलू आइटम्स होते हैं इनको वो बेचते हैं। यहाँ तक कि वो हर सामान जो कि जरूरत पड़ती है एक दैनिक जीवन, वो सारा अपनी दुकान में रखते हैं। कुछ फैमिलीज जिनका बस स्टैंड के पास घर होता है वो इस तरह की स्मॉल शॉप्स ओपन करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं और वो ईटेबल्स भी बेचते हैं। ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। रिक्शा वाला, टांगे वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द traditional bullock cart and bogie are people in the transport services. They ferry people and goods from one place to another and in return get paid for it. The number of people involved in transport has grown over the last several years. अब ट्रांसपोर्ट जो है ये भी एक सेक्टर है। बहुत सारे लोग बहुत सारे तरह के व्हीकल्स पालमपुर से लेकर के रायगंज तक के लिए चलते हैं। तो वहाँ पर रिक्शा वाला, तांगे वाला, जीप, ट्रैक्टर, ये सारे लोग जो है ये अपनी बुलक कार्ट इसके द्वारा भी जो है वो अर्निंग प्राप्त करते हैं। लोग ट्रांसपोर्ट के रूप में भी अपना जो मतलब इंटरेस्ट है, व्यापार है, वो करने लगते हैं और इसे एक अर्निंग का सोर्स बना करके उस पर भी अर्निंग करते हैं। बहुत सारे पिछले कई सालों से इस तरह की अर्निंग जो है ट्रांसपोर्ट की वहाँ के लोग कर रहे हैं। हियर इज गिवन एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल इज गिवन हियर, सो लेट्स सी। Kishora is a farm laborer like other such laborers. Kishore found it difficult to meet his family needs from the wages that he received. A few years back, Kishore took a loan from the bank. This was under a government program which was giving cheap loan to poor landless households. Kishore bought a buffalo with this money. He now sells the buffalo's milk. किशोर एक गरीब किसान था और उसने देखा कि उसकी जो अर्निंग है, जो मजदूरी से जो अर्निंग हो रही है, उससे वो अपने फैमिली की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। तो उसे लोन के बारे में मालूम चला। उसने बैंक से लोन लिया और गवर्नमेंट ने उसे लोन प्रोवाइड किया और लोन लेने के बाद फिर उसने बफेलो खरीदी और अब वो बफेलो का मिल्क बेचता है। फर्दर, he has attached a wooden cart to his buffalo and uses it to transport various items. Once a week, he goes to the river Ganga to bring back clay for the potter, or sometimes he goes to Shahpur with a load of jaggery or other commodities. Every month, he gets some work in transport. As a result, Kishore is able to earn more than what he used to do some years back. अब किशोर ने क्या किया, जो बफेलो लिया था उसने फिर उसने वुडन कार्ट लगा ली। वुडन कार्ट के द्वारा अब वो ट्रांसपोर्ट करने लगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करने लगा। 1 वीक पहले उसने गंगा रिवर से क्ले लाया और पॉटर को बेचा। इसके साथ साथ फिर वो जैगरी भी लोड करके शाहपुर तक ले जाता और दूसरी कमोडिटीज को भी ले जाता। इस तरह से अब वो ट्रांसपोर्ट में भी अपना काम करने लगा और इसका रिजल्ट ये हो कि किशोर की स्थिति अब जो बहुत अच्छी हो गई, जो कि पिछले सालों में नहीं थी।
सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज किशोर्स फिक्स्ड कैपिटल। किशोर की फिक्स कैपिटल क्या है या नहीं है। व्हाट डू यू थिंक वुड बी हिज वर्किंग कैपिटल। आपको क्या लगता है कि उसकी वर्किंग कैपिटल कितनी हो सकती है। इन हाउ मेनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज इज किशोर इन्वॉल्व, कितने तरह के प्रोडक्शन में किशोर इन्वॉल्व है। वुड यू से दैट किशोर हैज बेनिफिटेड फ्रॉम बेटर रोड्स इन पालमपुर, क्या आपको लगता है कि आप ये कह सकते हैं कि किशोर को जो अच्छी रोड बनी हुई है पालमपुर में उसका फायदा मिला है। तो ये आपको सोच करके आंसर देना है। दिस आंसर आर बेस्ड ऑन योर थिंकिंग स्किल्स, सो यू हैव टू थिंक about all these questions. And let's see the summary. Farming is the main production activity in the village. Over the years, there have been many important changes in the way farming is practiced. These have allowed the farmers to produce more crops from the same amount of land. This is an important achievement, since land is fixed and scarce. But in raising production, a great deal of pressure has been put on land and other natural resources. The new ways of farming need less land but much more of capital. The medium and large farmers are able to use their own savings from production to arrange for capital during the next season. On the other hand, the small farmers, who constitute about 80% of total farmers in India, find it difficult to obtain capital because of the small size of their plots. Their production is not enough. The lack of surplus means that they are unable to obtain capital from their own savings and have to borrow. Besides the debt, many of the small farmers have to do additional work as farm laborers to feed themselves and their families. Labor being the most abundant factor of production, it would be ideal if new ways of farming used much more labor. Unfortunately, such a thing has not happened. The use of labor on farms is limited. The labor looking for opportunities is thus migrating to neighboring villages, towns and cities. Some labor has entered the non-farm sector in the village. At present, the non-farm sector in the village is not very large. Out of every 100 workers in the rural areas in India, only 24 are engaged in non-farm activities. Though there is a variety of non-farm activities in the villages, we have only seen a few examples. The number of people employed in such is quite small. In the future, one would like to see more non-farm production activities in the village. Unlike farming, non-farm activities require little land. People with some amount of capital can set up non-farm activities. How does one obtain this capital? One can either use his own savings, but more often has to take a loan. It is important that loan be available at low rate of interest so that even people without saving can start some non-farm activity. Another thing which is essential for expansion of non-farm activities is to have markets where the goods and services produced can be sold. In Palampur, we saw the neighboring villages, towns and cities provide the markets for milk, jaggery, wheat, etc. As more villages get connected to towns and cities through goods roads, transport and telephone, it is possible that the opportunities for non-farm activities in the village would increase in the coming years. So dear children, ये समरी में आप देख सकते हैं कि जो फार्मिंग है वो मेन प्रोडक्शन होता है किसी भी गांव का, जैसे कि पालमपुर का एग्जाम्पल दिया गया। इसमें लेकिन बहुत प्रेशर होता है। सबसे पहला लैंड की ज़रूरत होती है, फिर लेबर्स की ज़रूरत, फिर कैपिटल की ज़रूरत, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जिनके पास लैंड है और कैपिटल है वो तो बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, पर जिनके पास नहीं है उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं कि जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं उसमें लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हालांकि बहुत कम, ओनली 25% लोग ही जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं उनमें वर्क करते हैं। और इस तरह के लोगों के लिए गवर्नमेंट जो है बहुत सारे लोन प्रोवाइड करती है ताकि वो अपनी अर्निंग को बढ़ा सकें, लेकिन इसके लिए उनको बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उन्हें
इंटरेस्ट ऑफ रेट पर लोन मिलना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये जैसे कि पालमपुर में है, मिल्क है, जैगरी है, वीट है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये लोगों को अर्निंग का रास्ता, अर्निंग का एक जरिया है, लोगों की अर्निंग का एक जरिया है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो विलेज हैं उनकी कनेक्टिविटी होना चाहिए टाउन्स और सिटीज से। तो वो कैसे पॉसिबल है? जब रोड अच्छे होंगे तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। ट्रांसपोर्ट और टेलीफोन का जो सिस्टम है ये भी बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी एक गांव का विकास हो सकता है।